Okay, students. So let's get started with O-level physics, October November 2022, paper 1, variant 2. So let's see question number 1. The diagram shows three forces acting on a block. The resultant force is 6 Newton to the right. Let's see the resultant force 6 Newton है भी या नहीं. How do we calculate the resultant force? 11 Newton is towards the right, 3 Newton towards the left, 2 Newton towards the left. Resultant force क्या आ जाएगी? 11 minus 3 minus 2. Resultant force is 6 Newton towards the right. Perfect. Which additional force produces a resultant force of 3 Newton to the left? Okay. तो बेटा आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट फोर्स को 3 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट बनाना है. हाउ विल यू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन थिंग. ऑप्शन ए को हम एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ए में हमें कह रहा है कि इफ आई ऐड अ 3 न्यूटन फोर्स हियर, if I add a 3 Newton force towards the left side, what will your resultant force become? The resultant force will be 11 minus 3 minus 3 minus 2. This will come out to be what? 3 Newton is your resultant force, but this resultant force is acting towards the right. बेटा हमें तो 3 Newton की resultant force चाहिए acting towards the left. A is not your answer. Let's analyze option B. Option B को analyze करते हैं. Instead of a 3 Newton force acting towards the left, let's apply a 9 Newton force acting towards the left. Can you calculate the resultant force? 11 minus 9 minus 3 minus 2. 11 minus 14. What does your resultant force comes out to be? Minus 3 Newton. Beta, can you realize you have a negative ka sign here? That means your resultant force will be acting towards the left. Your magnitude of force is 3. Hence, your resultant force becomes 3 Newton towards the left. B is your answer. Simple. Let's further analyze question 2. A teacher measures the length of her classroom. Okay, so a teacher measures the length of her classroom. What is the most appropriate instrument to use? By length of the classroom measure करने के लिए appropriate instrument क्या होगा? A 30 centimeter ruler? No. No classroom is 30 centimeter long. A vernier caliper? No. A micrometer? No. A tape measure would be the correct answer. Okay, which value is 1,000th of a meter? 1,000th of a meter क्या होता है? 1 divided by 1,000 meter, that is equals to 0.001 meters. बेटा कौन सी वैल्यू जो है 0.001 मीटर्स के इक्वल है? लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन डी. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रियलाइज सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू डू? डिवाइड बाय 100. व्हाट इज योर सेंटीमीटर? 0.1 डिवाइडेड बाय 100. क्या वैल्यू आ जाएगी मीटर्स में? 0.001 meters. I think we picked up the correct option at the first try. D is your answer. You can try out with A, B, and C as well. Divide all of them by 100 and see if any of them gives you the answer 0.001 meters. Chao, question 4 पे आ जाओ. A car of mass 1000 kg is traveling down a steep hill. The brake fails and the driver uses a sand fill safety road to stop the car. Okay. The car enters the sand at a speed of this. Okay. Can you calculate the initial kinetic energy of the car? Yep. 1 upon 2 m, that is 1000 into velocity ka square, that is 10 ka square. What does your kinetic energy comes out to be? 50,000 joules. ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? वर्क डन बाय द स्टॉपिंग फोर्स. व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी? 50,000. व्हाट इज योर स्टॉपिंग फोर्स? 2500 multiplied by the distance d. 50,000 divided by 2500. What is your distance d? Cancel, 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 cancel. 1, 2, 0. Distance comes out to be 20 meters. C is your answer. Simple. A ball starts from rest. That means your initial velocity beta क्या है? 0 है. Rolls down a steep slope. That means your velocity increases. The ball then rolls down a rough horizontal ground. रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का मतलब क्या है? फ्रिक्शन प्रेजेंट. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड? दैट मीन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट. फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो क्या होगा?
your velocity will decrease as you travel further. Which graph shows the speed of the ball at different times? Option B will get cancelled out instantly because you are starting from rest. Perfect. As you are starting from rest, you are gaining speed. Okay, that's in option A, in C, and in D. फिर क्या हो रहा है? You are moving on a rough horizontal ground. Option A will get cancelled out. Because in A, the speed becomes constant. On a rough horizontal ground, the speed decreases gradually. C will also get cancelled out because the speed is instantly becoming zero. D is the correct option. Because on a rough horizontal ground, on a ground where friction is present, आपकी speed आहिस्ता आहिस्ता decrease होती है. D is your answer. Let's move on to question 6. A block of wood is placed on a table. External forces act on the block, but the block remains stationary. Okay. A student suggests three conditions for the block to remain stationary. The resultant force on the block must be equal to zero. Yeah, this is the first condition. The resultant movement on the block must be equal to zero. This is the second condition for equilibrium. The external forces must act through the center of the block. That is not necessary. Only P and Q are your conditions for equilibrium. Resultant force zero होनी चाहिए. Resultant movement zero होना चाहिए. A is your answer. A car travels at 60 km per hour on a straight road. The road is dry. The driver applies the brake suddenly. The table shows the thinking distance, braking distance, and the overall stopping distance. The same car is driven by the same driver at 60 km per hour on the same road, but this time the road is wet. बेटा अगर रोड वेट होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस. If your braking distance increases, the overall stopping distance is thinking distance plus braking distance. ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. There is no change to the thinking distance. Braking distance increases, stopping distance increases. 7 का आंसर क्या हो गया बेटे? 7 का आंसर is A. Let's further move ahead. A car travels on a horizontal road around a bend at constant speed. So you are traveling around a bend, around a circle, okay? What is the direction of the resultant force on the car? So basically, your car is moving in a circle like this. Your car की resultant force acts towards the circle, towards the center of the circle. Why? बेटा जब भी आप सर्कल में मूव कर रहे होते हो, अराउंड अ बेंड मूव कर रहे होते हो, योर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट बेंड. सी इज योर आंसर टू 8. Let's further move ahead. A student makes two statements about mass and weight. Mass is the property of the body which resists change in motion. Yeah, that's correct. Weight is the amount of substance in a body. No. Uh, Only statement one is correct. 9 ka answer is A. Simple. Let's further move ahead. Okay. I think we have seen this question earlier as well. The graph shows how the extension of a spring changes with mass suspended from it when the spring is on planet X and when the spring is on planet Y. ठीक है. बेटा स्प्रिंग जब planet Y पे है तो when you are applying a mass of 2 kg, the extension is 10 centimeter. When the spring is on planet X and you are applying a mass of 2 kg, the extension is 30 centimeter. बेटा सेम मास अप्लाई हो रहा है planet X और Y पे. How is the extension different? Do you remember extension used to depend on the force? Planet Y पे force किसके equal हो जाएगी? Weight के equal. It is possible that the weight on planet Y is equals to mass into 1 over 3 gravitational field strength. और planet X पे हम ये कर सकते हैं. Planet X पे extension also depends on force. The weight on planet X is equals to mass into gravitational field strength 3 times the gravitational field strength of planet Y. यहाँ पे फोर्स हो गई mg, यहाँ पे फोर्स हो गई mg over 3. क्या आप रियलाइज कर सकते हो planet Y पे फोर्स क्या हो गई? mg over 3. planet X पे क्या फोर्स हो गई? mg. What is the difference in force coming from? planet X पे आपकी gravitational field strength, or you can say planet Y पे आपकी gravitational field strength is 1/3 of the value on planet X.
So it is not possible. No. The gravitational field strength on y and x are equal. No. The gravitational field strength on planet x is one third. No. उल्टा है. Planet y पे जो gravitational field strength है is one third of the gravitational field strength on planet x. D पे आ जाओ. Gravitational field strength on planet x is three times. Yeah, that's correct. Compared to the gravitational field strength of planet y, D is your answer. A student wishes to find the density of an irregular object. Density find करने के लिए first of all analyze the formula of density. Density is equals to mass over volume. बेटा mass आप किससे measure कर लोगे? Using a balance. Volume आप किससे measure कर लोगे? Measuring cylinder से. 2 and 3 D is your answer. 12 पे आ जाओ. You have to calculate the size of force F given that the beam is balanced. बेटा बीम का बैलेंस होना इक्विलिब्रियम में होना इसका मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट दिस फोर्स ऑफ 60 न्यूटन विल जनरेट अ क्लॉकवाइज मोमेंट ये क्लॉकवाइज मोमेंट किसके इक्वल आ जाएगा 60 इंटू 30 दैट इज 1800 न्यूटन सेंटीमीटर अब ये 30 न्यूटन की फर्दर फोर्स है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 30 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 1200 न्यूटन सेंटीमीटर. This force F is also generating an anti-clockwise movement. F into the distance that is 50. What does your answer comes out to be 50F. अब आप क्या कहोगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट 1200 plus 50F is equal to the clockwise moment that is 1800. F किसके इक्वल आ जाएगा take 1200 to the other side 50F is equal to 1800 minus 1200 F किसके इक्वल आ गया 600 divided by 50 F comes out to be 12 Newton. B is your answer. Simple. Four objects of equal mass rest on the table. The center of mass of each object is labeled G. सही है सबका center of mass labeled है. Which object is least stable? कौन सा object least stable है? बेटा for an object to be least stable there must be two characteristics. It must have a narrow base area and a high center of gravity. बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट लीस्ट स्टेबल हो तो आपका बेस एरिया क्या होना चाहिए नैरो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस व्हिच वन हैज द नैरोएस्ट बेस एरिया ऑब्वियसली ऑप्शन बी और सबसे हाईएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी लोकेटेड है पॉइंट बी की बी इज योर आंसर each tire of a car has an area of this ठीक है ये आपका एरिया आ गया the car has a mass of this. The weight of the car is equally distributed among four tires. The gravitational field strength is this. Can you first of all calculate the weight of the car? mg. Mass क्या है 1600 g क्या है 10. What does your weight of the car comes out to be 16,000 Newton. बेटा ये तो weight of the car है. What will be the force on one tire? एक टायर पे फोर्स क्या होगी weight divided by 4 16,000 divided by 4 that comes out to be 4,000 Newton. Can you calculate the pressure? Pressure is equal to force over area. Force is 4,000 divided by area that is 100. Cancel, 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 cancel. Pressure comes out to be 40 Newton per centimeter square. Your answer comes out to be C. 15 पे आ जाओ. A gas syringe contains a volume V1 of gas at pressure P1. The volume is reduced to V2 without any change in temperature. Which expressions give you the change in pressure? आपने change in pressure निकालना है delta P निकालना है. First of all, I know P1 V1 is equals to P2 V2. P2 को subject बना सकता हूँ मैं yes P1 V1 divided by V2 is equals to your pressure P2. Change in pressure किस तरह से निकलेगा P2 minus P1. P2 क्या है P1 V1 divided by V2 minus P1. Any options like that? C is your answer. 15 का answer comes out to be C. Simple as that. Nothing complicated here. अब आगे आ जाओ बेटा. How much work is done by force F? Force F diagonally लग रही है. So you will take the diagonal distance as well. Work done क्या हो जाएगा? Force into L. B is your answer. The input power to a motor is 12. The motor wastes 590 joules of energy in 1 minute. What is the efficiency?
एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी किस तरह आएगी? पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर क्या है? 12। टाइम क्या है? 1 मिनट। दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 60 सेकेंड्स। द इनपुट एनर्जी इज 720 जूल्स। यू आर वेस्टिंग 590 जूल्स ऑफ एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या आ जाएगी? 720 माइनस 590। आउटपुट एनर्जी क्या आ गई भाई? 720 माइनस 590। आउटपुट एनर्जी क्या आ गई भाई? 130 जूल्स। What does your efficiency comes out to be? 130 divided by 720 into 100. What does your efficiency comes out to be? 18% is your answer. Simple. Nothing complicated here. Electrical motors have an efficiency of about 90% when used in an electric train. Which form of wasted energies are produced? कौन सी form of wasted energy produce होगी in an electric train? Obviously, thermal energy तो produce होगी as waste energy. Sound energy will also be produced as waste energy. D is your answer. What is the unit of power? Power किसके equal होता है? Energy over time. Energy का unit क्या होता है? Joule divided by second. B is your answer. The unit of power is joules per second. B is your answer. Let's further move ahead. Acha, this has been excluded from the syllabus, so we are not doing this. Let's further move ahead. Okay, यहाँ पे आ जाओ. Air is trapped in a metal cylinder by a piston. Okay. The piston is free to move and the air is at atmospheric pressure. The cylinder is in hot water. Okay. The cylinder is taken out of water and left to cool. Perfect. What happens to the mass of the air in the cylinder and its pressure as it cools down? बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि air is trapped in a metal cylinder by a piston. The piston is free to move and the trapped air is at atmospheric pressure. Pressure क्या है आपका? Constant. You are at constant pressure. Perfect. The cylinder is in hot water. Perfect. The cylinder is taken out of water and left to cool. आपका temperature decrease हो रहा है. Your volume will also decrease. What happens to the mass of the air and pressure as it cools? The mass of the air will never ever change. Also, can you realize बेटा कि यहाँ पे आपका pressure already constant था, तो pressure of the air does not change as well. A is your answer. 21 का आंसर is A. Let's further move ahead. अच्छा जी, ये भी हमने अभी ट्राई किया था. Let's do it again. So a mirror is placed in the path of a ray of light. So this is your ray of light ka initial path. This is your actual path of the ray of light. Now your ray of light has deflected and this is your path. You have to calculate this angle x by which the direction is changing. बेटा ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 40 डिग्री. बाय व्हाट एंगल हैज द डायरेक्शन चेंज? किस एंगल से डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हुई है? ये कंप्लीट एंगल क्या है? 180. 180 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 180 माइनस 80. The angle by which the direction of light changes is 100 degrees. C is your answer. 23 पे आ जाओ. A ray of light in water is refracted at the surface into air. Water से air में जा रहे हो, your light is getting refracted. Which diagram shows the angle of incidence and the angle of refraction? Angle of incidence is always between what? Angle of incidence is always between the incident ray and the normal eye. Angle of refraction is always between the refracted ray and the normal. A is your answer. 223. अब आगे बढ़ते बेटा further. Now, if you further see, a thin converging lens forms a real focused image on an object as shown. Which distance is equal to the focal length of the lens? Can you realize rays parallel to the principal axis? Beta, koi bhi ray parallel to the principal axis, once it hits the lens, it will pass through the focal point. This is your optical center. The distance between the optical center and the focal point is known as your focal length. F. Lx is your focal length. B is your answer. Simple. 25 पे आ जाओ बेटा.
विच रे डायग्राम शोज द सेक्शन ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा जी, हमने बताना है कौन सी रे डायग्राम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस को सूट करती है। नाउ इफ यू सी ऑप्शन ए, बिफोर द लेंस आपकी रेज किस तरह आ रही है, लाइक दिस। आफ्टर द लेंस द रेज हैव कन्वर्ज्ड, इनवर्ड आ गई। देखो बेटा, अगर आप ऑप्शन ए को एनालाइज करो तो आफ्टर द लेंस योर रेज हैव मूव्ड इनवर्ड, दे हैव कन्वर्ज्ड। दिस इज नॉट व्हाट अ डाइवर्जिंग लेंस डज, ए विल गेट कैंसिल्ड। चलो बी को ट्राई कर लेते। बी में दिस वाज योर इनिशियल रे, फाइनल रे आफ्टर द लेंस अंदर की तरफ आ गई है, वापस इनवर्ड आ गई है, दिस हैज कन्वर्ज्ड। बी विल आल्सो नॉट बी योर आंसर। ठीक है, सी को देखो। सी में दिस वाज योर रे बिफोर द लेंस, इफ यू एनालाइज दिस हैज आल्सो कम इनवर्ड, अंदर की तरफ आ गई है ये भी, दिस हैज आल्सो converged. C is also not your answer. The remaining answer is B, which we will take. But let's check this out. Can you realize before the lens आपकी रे इस तरह की थी, अब क्या हो रही है, लेंस बाहर की तरफ आ गई है, आउटवर्ड मूव कर रही है, या कह सकते हो डाइवर्ज कर रही है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। Many devices produce electromagnetic waves when operating, ठीक है। Which device produces electromagnetic waves of the highest frequency? अच्छा जी, highest frequency के electromagnetic waves कौन produce करता है, sunbed। Okay. Which two frequencies are both outside the range of audible frequency for a human ear? 2 hertz तो outside है, 500 is within है, we will cancel this out. 2 hertz is outside the human hearing range and 25 kilohertz is also outside the human hearing range. B is your answer। 28 पे आ जाओ। Sound waves are displayed as a trace on the screen of an oscilloscope. Which trace shows a sound that becomes quieter with a higher pitch? अच्छा जी, आप क्वाइटर हो रहे हो तो आपका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज। आपकी पिच हायर हो रही है, दैट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज किस में कर रहा है, एम्पलीट्यूड आइदर बी में या सी में डिक्रीज कर रहा है। ए और डी को कैंसिल कर लो। फ्रीक्वेंसी किस में इंक्रीज कर रही है, ओनली इन ऑप्शन सी। सी इज योर आंसर। क्योंकि इफ यू रियलाइज पहले आपकी 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है विद इन द सेम टाइम, फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज। ओके। द नॉर्थ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड in turn close to a piece of iron, the south pole of another magnet, and a piece of copper. Which objects are attracted to the north pole of the permanent magnet? North pole से क्या क्या अट्रैक्ट होगा, पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट होगा जी बिल्कुल, साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, पीस ऑफ कॉपर अट्रैक्ट होगा। नो, ए इज योर आंसर। 229। The north pole of a permanent magnet attracts a iron because iron always attracts magnet। साउथ पोल भी अट्रैक्ट करेगा बट कॉपर अट्रैक्ट नहीं करेगा। What is the possible position for this? हमने बताना है कि कंपास की पोजीशन कब इस तरह से होगी। सो इफ यू रियलाइज मैग्नेटिक फील्ड्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। इफ यू रियलाइज अगर मैं थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड सही बनाऊँ ना, हाँ, इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड करेक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कैन यू रियलाइज ऑप्शन सी। Option C, में it is possible that the compass is pointing downward. C is your answer. Two oppositely charged plastic rods are placed next to each other. What will be the movement? Unlike charges attract towards each other. Explanation क्या है? Opposite charges attract. The most easiest question of entire O levels physics. C is your answer. A meter rule, a meter that measures the rate of flow of charge in a resistor is placed in a circuit. बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर रहा है, मतलब क्या मेजर कर रहा है, करंट आई मेजर कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, करंट कौन मेजर करता है, एम मीटर। एंड एम मीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज, हमेशा ये बात याद। एम मीटर है, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज। बी इज योर आंसर। 33 पे आ जाओ बेटा। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी? कौन सी डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करती है? डी इज योर आंसर, मोटर। Why is the fuse used in an electrical appliance? To protect the appliance? Simple.
A coil of wire is rotated at a constant rate between the poles of a U-shaped magnet. The two ends of the coil are connected to different slip rings. Which graph shows how the voltage V between the slip rings varies with time? हमेशा 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 याद रखो द वोल्टेज ऑफ एन अच्छा दीज आर स्लिप रिंग्स ठीक है स्लिप रिंग्स किस में लगी होती है बेटा एसी जनरेटर में हमेशा ये बात याद रखो स्लिप रिंग्स हमेशा एसी जनरेटर्स में लगी होती हैं और एसी जनरेटर्स में आपका वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट करता है इन बोथ डायरेक्शन सी इज योर आंसर which statement about a transformer is correct? The changing magnetic field in the transformer induces an EMF in the secondary coil. Yeah, A is correct. अब आ जाओ 37 पे Three types of radiation emitted by unstable nuclei are helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves, and electron. What are these types of radiation? हीलियम न्यूक्लियाई किसको रिजेंबल करती है अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं गामा रेज को इलेक्ट्रॉन्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा पार्टिकल्स को 37 का आंसर है The diagram shows a relay to switch on an electrical motor. अच्छा जी एक relay लगी हुई है to switch on an electrical motor. A student makes five statements to explain how the relay switches on the electrical motor. The statements are not in correct order. क्या होगा? The अच्छा we have to put the statements in correct order. Okay. So first of all, what will happen? The primary circuit का switch will get closed. This will magnetize the iron core. कोई ऐसी चीज लिखी हुई है? The switch in the primary circuit is closed. Yeah. This is your step one. उसके बाद क्या होगा दिस आयरन कोर विल गेट मैग्नेटाइज कोई ऐसी चीज लिखी हुई है यस दिस इज योर स्टेप टू उसके बाद क्या होगा वंस दिस आयरन कोर गेट्स मैग्नेटाइज दिस विल अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर ठीक है दिस विल अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर ठीक है फिर क्या होगा जैसे ही आयरन आर्मेचर अट्रैक्ट होगा द कॉन्टैक्ट्स विल गेट क्लोज दिस इज योर स्टेप 4 and the current in the secondary coil rotates ठीक है दिस इज योर स्टेप 5 कोई ऐसा ऑप्शन है 5 फिर आपके पास आ गया 1 फिर आपके पास आ गया 4 फिर आ गया 2 एंड देन 3 5 1 4 2 3 डी इज योर आंसर let's further move ahead okay different radioactive emissions have different characteristics a student lists the following characteristics of an alpha particle it has a positive charge. It has high penetrating ability. No. It is a component of the electromagnetic spectrum. No. Only characteristic P is correct. A is your option. A wooden object is believed to be 600 years old. Which isotope found in the object is used to determine the age of the object? बेटा age of the object determine करने के लिए हम कौन सा isotope use करते हैं हमेशा carbon 14. C is your answer. This process is known as carbon dating. I hope this paper was also clear. If you have any questions, you can ask in the comment.